thank you, sir. Happy New Year. Same to you. Happy New Year. Why did you interest to do this short film in March? What are Uh, the story and Actually, we were sitting 3-4 months back, and I asked, I told Asis that let's start some. I also want to get in. I also want to enter in this business. After that, he told me about different subjects. So ultimately, I didn't like that. So few days back, he told me the story of this mask, which really I liked it because the situation, the situation, this is a perfect subject by looking at the present situation. So then I told him that let's go ahead. Then we started this venture. when you release and where it will release? Huh? Where it will release? The March. It will be released hopefully by March. Okay. And where the shooting has been done? Different location, the streets and this. All in Kolkata? Yeah, it's in Calcutta. The market, this fish market, vegetable market, bus, all shootings, all scenes will be from Calcutta only. This is your first movie as a producer. Yeah, this is my first movie. How is it? How is the experience? And do you have any Experience? plans to do more? Yeah, I do have plan to produce more movies. This is my first venture, so this it has just started. So let's see. Let's hope for best. And what is your message to audience as a producer? My message to producer is related to this movie because different people have got different thinking. So my message: listen, everyone, and what you personally feel you should do. So this is the message. Thank you so much. मुझे बहुत अच्छा लगा और मुझे बहुत अच्छा लगता है कलकत्ता और मैं भी थोड़ी देर पहले बात कर रहा था मुझे काफ़ी पसंद है आई लव कलकत्ता करीब तीसरी चौथी बार आई तो 4 टाइम आया इस फिल्म के बारे में कुछ बताएंगे क्या है मास्क इस फिल्म का मास्क के ऊपर ये फिल्म है कि कृपया करके मास्क लगाइए नो मास्क नो एंट्री वो कहीं भी और हर किसी को मतलब इन सब चीज़ों का जैसे कि सरकार भी बताती है आम नागरिक भी इस चीज़ को जानता है कि कुछ गज की दूरी और मास्क लगाना सैनिटाइज करना ये हमारा फर्ज है लेकिन मेरा जो किरदार है वो इसे नहीं मानता वो इन चीज़ों में बिलीव नहीं करता उसको लगता है कि ये सब फेक है ये अफवाह है कि कोरोना नाम का कोई ऐसा है नहीं कोई बीमारी नहीं तो इस तरह से ये चल रहा है और मैं ये किरदार निभा रहा हूँ आपका जो कैरेक्टर है कुछ दिन पहले एक वर्ल्ड के पॉपुलर लीडर ने ऐसा कहा था कि मास्क पहनने की ज़रूरत नहीं है कोरोना कुछ नहीं है ये क्या उनसे प्रभावित है नहीं हमारा सब्जेक्ट बहुत तैयार हो गया था मेरी डेटा भी बड़ी मुश्किल से जिस तरह से सेट हो पाई है तो उन्होंने आप कहा होगा हो सकता है उन्होंने पता लग गया होगा कि हम लोग मास्क बना आगे क्या कुछ What is your upcoming work? आगे क्या है आगे का प्लान है मेरा एक फिल्म है बहुत अच्छी फिल्म है शेर विद्या बालन है उसमें मुख्य और अमित मसूर का डायरेक्टर है न्यूटन वाले वो एक फिल्म है बल्कि अपनी पार्ट 2 है वो एक फिल्म है और नेटफ्लिक्स का एक सीरीज़ है नैना वो है एक फिल्म है सोनम गुप्ता बेवफा वो बहुत ही इंटरेस्टिंग एंटरटेनिंग फिल्म है और क्या बहुत सारी चीज़ें आई थिंक 2-3 दिन का ही है क्योंकि शॉर्ट फिल्म है तो शॉर्ट फिल्म के लिए कम ही वक्त मिला मैं तो चाहता था कि कम से कम 1 वीक होना चाहिए पर Recent you have done a web series. Tell me something about that. A web series with Porombodo Chattopadhyay. You have done. नहीं मैंने अभी नैना एक सीरीज की है नेटफ्लिक्स के लिए हाँ. और अदरवाइज एक सुना होगा आम आदमी फैमिली एक सीरीज है मेरी वो पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 आ चुका है अभी हम लोगों ने मतलब उसका स्पेशल वैकेशन न्यू ईयर के उस पर किया था उसके 3 एपिसोड भी मतलब रिलीज़ हो चुके हैं तो पर मैं डेफिनेटली मतलब ज़्यादा सीरीज नहीं कर रहा और मैं मैक्सिमम मेरा मन है कि मैं फिल्में ही करूँ থ্যাংক ইউ স্যার আচ্ছা বর্তমান সময়ে মাস্কের ভূমিকা আমাদের জীবনের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত সেই জন্যই কি আপনার সিনেমার গল্পের প্রেক্ষাপটটা মাস্ক বাট একটা ইন্টারেস্টিং ন্যারেশনটা একটু ইন্টারেস্টিং ওয়েতে লেখা এই সমসাময়িক পরিস্থিতিতে দাঁড়িয়ে একটা মানুষের জার্নি
যে মাস্ক পরতে চায় না, কোনো বিদ্রোহিত নয়, এটা একটা গল্প, জাস্ট একটা স্টোরি। একটা মানুষের জন্য সে মাস্ক পরতে চায় না, এবং সমাজ এবং তার নিজের পরিবার, তার পারিপার্শ্বিক পরিস্থিতি কীভাবে রিয়্যাক্ট করছে তাকে নিয়ে, এবং কীভাবে তাকে রিফিউজ করছে। আমরা তো নিয়মের মধ্যে দিয়ে বাঁচি, আমরা একটা নিয়ম আমাদের কাছে এলে আমরা আগে পিছিয়ে জাজ করি না নিয়মটাকে, ঠিক আছে? আমরা চট করে নিয়ম, আর যেটা আমাদের মধ্যে একটা ভয়ের ভীতির সঞ্চার করে, নিয়মটাকে আমরা নিয়মটা আদৌ আমাদেরকে প্রোটেক্ট করবে কিনা আমরা জাজ করি না, কিন্তু ঠিক তখন আমরা হু খুঁজে বেড়াই আর কি। তো এই লোকটা বিশ্বাস করে মাস্ক পরে কিছু হয় না, পুরো সামাজিক পরিস্থিতি না বদলালে করোনাকে কন্ট্রোল করা যাবে না, ঠিক আছে? এবং ও আইডেন্টিটি ক্রাইসিসের একটা প্রবলেম আছে, সবাইকে বাঁদরের মতো লাগে মাস্ক পরার মনে হয়, তাই ও মাস্ক পরবে না, ফাইনাল মাস্ক পরে না, তাকে কি প্রতিকূলতার মধ্যে যেতে, এটাই গল্প। যেটা কথা শুট হয়েছে সেটা যদি পুরো কলকাতা শুট। আর কে ক্যারেক্টার কে আছে? মুখ্য চরিত্র বিজেন্দ্র কালা, হ্যাঁ, আর বাকি পার্শ্ব চরিত্র কিন্তু দু একজন। সেজুতি মুখার্জি আছেন আর এটা থিয়েটার। হ্যাঁ বলুন। থিয়েটারে সেজুতি মুখার্জি আছে। আচ্ছা, আর বলছি এটা কবে মুক্তি পাবে বা কীভাবে আমরা দেখতে ইউ আর প্ল্যানিং মার্চ রিলিজ। এটা কি কোনো মানে হলে গিয়ে দেখতে পাবো নাকি ওটিটি? ওটিটি। থ্যাংক ইউ সো মাচ। Welcome, sir. Welcome to Phil Gossip. And this is a film that you are making, and the topic is very interesting, the mask. Okay. And how do you came up with this idea? You or the director, Ashish sir? How do you came? Ashish Da came up with this idea, and since the entire human civilization is going through a similar emotion right now, and we are in a very perplexing situation. We don't know what is right and what is wrong. We are questioning things. We are questioning life as such. We are questioning our existence. And the thing is, the mask signifies, it's a symbol of it's a symbol of fear, the fear of death, the fear of the inevitable. And we are living in that fear every moment. But we don't like living in fear. Any human won't like this emotion. So we want to break free, we want to live freely again. It's like an independence movement. We want to be independent again, like the entire civilization, not as a nation or not as a unit, but in a whole. We need to be independent now. We want to be independent. And our basic right, the right to breathe, we've lost that, and we are in such a situation that if we breathe, if we don't use the mask, then even we are in a problem, and if we are using the mask, then we are in a problem. So writers or storytellers mostly look for conflicts, and we don't have a larger conflict than this. Like in the history of human civilization, this is the biggest conflict that we have, that we can have. And especially for the common people, okay, who were literally at first they were thinking about using the mask, and now after almost 6 months or more than 6 months, they are not even thinking of about the mask. But there is a dilemma, okay, whether, as you said, whether to use it, whether not to use it. And it's starting from the common people. It is sharing from all over the world, okay, from India and from all over the world. The mask, the only question remains. Okay, now as you're saying it, so what is the hero of this your story is doing, whether he is using the mask or he is against the mask? He actually, his idea is that he understands what is the importance of a mask, but the thing is, a mask can save you from something to a certain limit. It's not stopping this disease. It's a precaution. But at the end of the day, he's frustrated by the other things that the pandemic has caused. Like his unemployment is killing him, poverty is killing him, other diseases are killing him. The expenses are going high, and that is killing him. There are a lot of things that are killing him. The mask can save you from this one disease, but what about the other diseases? So he is basically frustrated with life, not with the mask, and he wants to break free. Exactly. He wants to break free. So it becomes a symbol. Exactly. It becomes a symbol of freedom, that he says this mask won't be able to save you from all these things. It can save you from this disease, but there are so many things happening, and we've shifted all our focus on this one disease, but we are looking away from a lot of things now. So we need to look at life as a holistic thing. We cannot just focus on one disease, because even if this disease goes, people will die. People have been dying. Exactly. We are made that way. We are created that way, and the most important thing that we have is time, and we've lost 1 year. Exactly.
Every one of us lost Every one of year. us, all of us have lost 1 year. And we don't know when this will end. And when are you releasing this movie? Well, we don't have a date in mind, I think. Even I don't know about that right now. Okay. So probably as soon as possible. Will it be launched in OTT platform or in halls, cinema halls? I'm not too sure about those things right now. I'm just focusing on the creative part and the creative aspect of it. Thank you, sir. Yeah. Thank you very much.